Our top story, the contentious Waqf Amendment Bill passed by Parliament this week now faces a Supreme Court showdown. The Congress MP Mohammad Javed and the AIMIM's Asaduddin Owaisi have filed petitions calling it discriminatory and unconstitutional. Protests have erupted nationwide as the debate intensifies. Will the court uphold or strike down this polarizing law? Ayes 128. Noes 95. The bill is passed. A day after the Waqf Amendment Bill was passed in the Rajya Sabha, the BJP has taken on Congress MP Sonia Gandhi for her remarks on the bill. Sonia Gandhi said at a meeting of the Congress Parliamentary Party that the Waqf Bill was a brazen assault on the Constitution and it had been bulldozed through Parliament. The BJP demanded an apology from Sonia Gandhi. वो देखिए सोनिया गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोग निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया। इतना मेहनत करके देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने के बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ और बुलडोज किया वो सही नहीं है, गलत बात है। सुबह के 3 बजे तक हम लोग थे लोकसभा में, 12 बजे शुरू हुआ। सुबह के 4 बजे तक थे राज्यसभा में। इतनी लंबी बहस तो मैंने देखी ही नहीं है। बहुत विनम्रता से मुझे सोनिया गांधी से एक बात पूछनी है कि आपके पुत्र राहुल गांधी क्यों नहीं बोले और आपकी बेटी आदरणीय प्रियंका जी हाउस में क्यों नहीं आई? आप संख्या बल के आधार के ऊपर जो राइट टू इक्वेलिटी की बात है, जो सबको बराबरी के अधिकार की बात है, आपने तो बुलडोज कर दिया। तो ये बुलडोज ही तो क्या है? आप अपने से असहमत लोगों को क्या उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? आपका तो 400 पार का सपना पूरा हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो 400 पार कर लोगों को जो उनके विचारों से असहमत हैं, उनके विचारों को बुलडोज करने का काम करें। आपने तो किया है। Even as the bill was passed in both houses of the parliament, protests have now erupted in Kolkata and Ahmedabad as well as Chennai against the bill. Thousands gathered on the streets after weekly prayers by the Muslim community to protest the Waqf bill. The Waqf board so far, which has been controlled by the minority community, now will have a non-Muslim person in that Waqf board. And they're saying that these are religious donations that have been made so far and for the purpose of social service. Vijay's statement comes amid the Tamil Nadu government and the ruling DMK deciding to take this issue to the Supreme Court, saying that the amendment snatches away the rights of the Muslims besides destroying what they call communal amity in the country. The Waqf bill needs the President's nod for it to turn into a law. The bill will be sent to President Murmu and her approval will pave the way for amending the 1995 laws governing Waqf properties. However, the Congress has moved the Supreme Court against the bill, calling it discriminatory, while the government has argued that the changes will strengthen the regulation of Waqf properties. The court is now expected to examine whether the amendments pass constitutional muster. An NDTV Bureau report.